Hello student. In the last session we have already discussed about the Rutherford model of atom, drawbacks. Today I will discuss Bohr model of atom. Bohr model of atom. Carefully listen. Bohr model of atom. The drawbacks of the Rutherford. Drawbacks of the Rutherford model of atom were removed by Niels Bohr. Name is Niels Bohr. In 1930. In 1930. Bohr had applied the quantum theory of radiation that was developed by Max Planck and Einstein to the Rutherford model. Bohr applied the quantum theory of radiation that was developed by Max Planck and Einstein to Rutherford model of एटम. बोर ने जो है क्वांटम रेडिएशन थ्योरी ऑफ रेडिएशन जो है, जो कि मैक्स प्लांक और आइंस्टीन के द्वारा डेवलप किया गया था, उसको जो है रदरफोर्ड मॉडल में उसने अप्लाई किया एंड गिव ए न्यू मॉडल, है ना, एंड गिव ए न्यू मॉडल of atom which is known by Bohr model of atom. इसे हम बोर मॉडल ऑफ एटम के नाम से जानते हैं. बोर हैड made some postulate which describe the model of atom. Some postulate of the Rutherford model written by the Bohr in his model, like the positive charge situated in the core of central core region of the atom, which is called nucleus, and the whole mass of the atom centralized at the nucleus. रदरफोर्ड का एजम्पशन था कि सेंट्रल रीजन, जो सेंट्रल कोर रीजन है, पॉजिटिवली चार्ज होता है और वहां पर पूरा मास जो है सेंट्रलाइज होता है, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं. इस पोस्टुलेशन को बोर ने भी अपने पोस्टुलेट में शामिल किया. नेक्स्ट पोस्टुलेट, द इलेक्ट्रॉन revolve around the nucleus, revolve
around the nucleus in a certain permitted circular orbit. The word here is, understand clearly, the electron that revolve around the nucleus in a certain permitted circular orbit. कुछ खास ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन जो निश्चित ऑर्बिट है उसमें घूमने के लिए परमिटेड है, अलाउड है. The energy of the permitted orbit are fixed. जो एनर्जी होती है इस परमिटेड ऑर्बिट की, वो क्या होती है? फिक्स होती है, नियत होती है. The energy of the electron revolve in the permitted orbits are associated with the energy of the orbit. अर्थात इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और ऑर्बिट की एनर्जी अलग नहीं है. इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी से एसोसिएट रहती है, उसी से बंधा हुआ है. दोनों की अलग अलग नहीं होती. सो we say the energy of electron associated with the permitted orbit. यानी जिस ऑर्बिट में उससे घूमने की इजाजत है उसमें उसकी एनर्जी ऑर्बिट की एनर्जी से संबंध रहती है. ठीक है. तीसरा एजम्पशन, दूसरे एजम्पशन, दैट ऑर्बिट विच हैज द फिक्स एनर्जी, the certain permitted orbit in which the electron are allowed to revolve around the nucleus, and each permitted orbit has the fixed energy. So these orbits are also known by a stationary orbit or the energy level. इसलिए इस ऑर्बिट को हम स्टेशनरी ऑर्बिट के नाम से जानते हैं या फिर इसे एनर्जी लेवल कहा जाता है. इट्स क्लियर. फर्स्ट एजम्पशन, फर्स्ट पोस्टुलेट वाज द पॉजिटिव चार्ज situated in a central core region of the atom called nucleus, at which the whole mass of atom is considered to be centralized. Second one, the electrons revolve around the nucleus only in a certain permitted orbits. The energy of the orbits, permitted orbit, are fixed. The energy of the electron revolving in a permitted orbit is associated with the energy of the orbit. Since the energy of the each permitted orbit is fixed, so these orbits are also called the stationary orbits or the energy level. Third one, the electrons are allowed to revolve only in those orbits in which the angular momentum of electron is quantized or integral multiple of nh by 2 pi. h बटा 2 pi. Again listen. The electrons are permitted to only those orbits to revolve around the nucleus
in which the angular momentum of electron is integral multiple of h by 2 pi, where h is the Planck constant. h क्या है? Planck constant है. If m is the mass of electron, mass of electron, r is the radius of orbit in which electron accelerating ठीक है. v is the velocity of electron in permitted orbit. Then angular momentum of electron L बराबर mv. So according to this postulate कहता है कि the electrons revolve around the nucleus are allowed only those orbits in which the angular momentum of the electron equal to the integral multiple of nh bata 2 pi. nh by 2 pi, where n is the principal quantum number which has integral value n बराबर 1 2 3 ... and h is the Planck constant. तब इसके अनुसार MVR equal to NH by 2 pi. This is the condition. This is the most important postulation of the Bohr. According to it, that is the angular momentum is quantized. Early we have known only the charge are quantized. Here with the electron is also a charged particle. The angular momentum is quantized. This is the most important postulate of the Bohr. Clear? The angular momentum is quantized. This is the third one. Fourth one, according to the Bohr, as long as an electron resides in a permitted orbit, as long as the electron resides in a permitted orbit, does not radiate energy. अर्थात जिस परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, जितने समय तक उसमें रिवॉल्व करे, वहां पर इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रेडिएशन नहीं करता है. दिस इज द वायलेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स. जो रदरफोर्ड में था कि ये चार्ज पार्टिकल्स मूविंग
इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अनुसार जो है चार्ज पार्टिकल्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ इट ऑलवेज लूज इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. दिस drawbacks is removed here by assuming that as long as the electron resides in a permitted orbit does not radiate energy. यानी जब तक किसी जो है परमिटेड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है, चक्कर काटता है, एनर्जी का रेडिएशन नहीं होता है. इट क्लियर? The electrons only can radiate energy or absorb energy when it jump from the one orbit to the another orbit. एनर्जी में परिवर्तन तभी होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से यानी एक ऑर्बिट से निकलकर दूसरे ऑर्बिट में जाता है. When it jump from the higher orbit to the inner one, then it's radiate energy. When it going from the lower one to the higher one, it absorb the energy in the form of the electromagnetic radiation. यदि हम दो एनर्जी लेवल लें, if you take the two energy level, E1 and E2. If you take the E1 and E2 such that the E2 is greater than E1. If the electron a jump from energy level E2 to energy level E1, then it radiates the energy. It radiates the energy. That means E2 minus E1, and which is equal to the h neta, where neta is the frequency of the radiation. Where neta is the frequency of radiation. If an electron absorbs the energy, it jump out from the inner orbit to the higher one, higher energy level. In this case, when the electron going from the lower energy level, suppose that this is the orbit, suppose the electron is going from this energy level to this energy level. In this case, it absorbs the energy. Absorb the energy. When it drop out from the higher energy level to the lower energy level, in this case, radiate the energy. तब उस स्थिति में वह एनर्जी को क्या करता है? रेडिएट करता है. इट क्लियर? तो व्हाट अमाउंट ऑफ द एनर्जी इट रेडिएट? the amount of energy radiate equal to the amount of energy absorbed, equal to the energy amount to the energy absorbed. वह उतनी ही एनर्जी को रेडिएट कर देता है जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था. एंड दैट एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब्ड और रेडिएट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू h neta. Is it clear? So the energy of an electron only be changed when it jump from one orbit to the another orbit. Either it jump out or jump in. या तो नीचे वाले से निकलकर लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाए या हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आए, तब जो है
एनर्जी के परिवर्तन होता है। इन दिस वे द ड्रॉबैक्स ऑफ द Rutherfords are removed. Next one, he also agreed with the electrostatic force between the nucleus and the electrons. Between the nucleus and the electrons acts electrostatic force. And this electrostatic force provides the centripetal force. यह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ड्यू टू विच द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अनदर थिंग हियर, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑल्सो एक्ट हियर, बिकॉज वी नो द ग्रेविटेशन, the force which act between the two particles. This is the force of attraction. The force of attraction between the two particles is called the gravitational force. So the positively charged particle is the proton and negatively charged particle is the electron. So both are the particle having some mass. So gravitational force is also exists. But the gravitational force is too much weak, nearly 2000 times weaker than the Earth gravitational force. Gravitational force. So this gravitational force does not affect the electrostatic force which provides the centripetal force. This force, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ लगता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, which nearly 2000 times weaker than the gravitational force of the earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से 2000 गुना वह जो है कम होता है, एंड दैट इज वाई इट डज नॉट अफेक्ट, यह ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अफेक्ट नहीं करता है किसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, विच प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. दिस इज द बोर मॉडल ऑफ द एटम. In the next session, I will talk about the Bohr theory of hydrogen atom. Thanks.